Hello everyone. Today we'll discuss new chapter, that is gravitation. Okay, we already discussed in previous chapter Galileo experiment, law of inertia. Okay, Newton first law, second law, third law. Okay, and we also seen the circular motion. Okay, uniform circular motion भी हम लोग देखे थे. Okay, today we will start what new chapter, that is gravitation. Okay, one famous story is there. Newton was sitting in the garden. Okay, and apple broke from tree and come down to the earth. Then Newton guess or think, not guess, actually he think why the apple comes down. Okay, why it not goes up. Okay, it's mean some force is attracting the apple or any object in the earth. Okay, due to that force body comes down. Okay, so he gives what, universal law of gravitation. Okay, universal law of gravitation. Okay, this is also known as Newton's law of gravitation, and somewhere it is also written as what, inverse square rule. Okay, so what Newton said in this law is said that every object in the universe okay, every object in the universe attracts every other object with a gravitation force. Okay, suppose two objects are there. This is object A and this is object B. Okay, so every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses. Okay, suppose the mass of the first object is m1 and mass of the second object is m2. Okay, so product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, the force is along the line joining the centers of two objects. ठीक, उसको और अच्छे से समझते हैं. Suppose the distance between them is d. Somewhere it is also written as r. Okay, आगे हम लोग जल्दी देखेंगे how. Okay, so Newton said that F is directly proportional to product of their masses. Okay, it's mean when mass will increase, then the force will also increase. We already discussed about the directly proportional. Suppose x is directly proportional to y. Okay, x is directly proportional to y. It's mean if the value of y will increase, then the value of x will also increase. Okay, suppose the value of y will decrease, then the value of x will also decrease. That is proportional, not equal. Okay, now, and what is inversely proportional? Suppose x is inversely proportional to 1 upon y. It's mean the value of y will increase, then the value of x will decrease. If the value of y will decrease, then the value of x will increase. So we already discussed deeply about the proportionality of the quantities. Okay, so now come to here, and he said that Newton, that the force is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, let us consider two objects A and B of masses m1 and m2 separated by a distance d. Okay, so according to inverse square law, okay, law of gravitation, the force of gravitation, इसको हम लोग बोलते हैं force of gravitation. Okay, so यहाँ से हम कर सकते हैं F. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. Okay, so from equation 1 and 2, F is proportional to m1 m2 upon d square. Okay, so ये हो गया. दोबारा मान लेते हैं equation number 3. Okay, and we know that if we put the equality sign, then we have to put one what, proportionality constant. Here proportionality constant is capital G. Okay, this is m1 m2 upon d square Newton. Okay,
and it is universal gravitation force. Okay. Okay, this is universal gravitation force. Now, this is universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Okay, constant. Okay. So this is universal gravitation constant, and this is proportionality constant also. But here we will say that what universal gravitation constant, and the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay. और ये वैल्यू कौन निकाला था? हेनरी कैवेंडिश. दिस इज नॉट फाउंडेड बाय न्यूटन. ओके, फाउंडेड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश. ओके. Now, what is the unit of universal gravitation constant? Okay, and suppose some time it is also asking significance of Newton's law of gravitation in nature. Okay, so what are the significance? First one is for the existence of solar system. Okay, for the existence of solar system. Okay, it's mean what? Motion of the planet around the sun. Okay, second one is for holding the atmosphere near the surface of earth. For holding the atmosphere, for holding the atmosphere near the surface of the earth, near the surface of the earth. ठीक है, और भी significance है, just like motion of moon around the earth, occurrence of tides. Okay, occurrence of tides. Okay, TIDS. Okay, don't write anything. Okay, I already given the notes of this chapter. Okay, now come to the next one. Sometime one topic is there, that how did Newton guess the inverse square rule. ठीक है, interesting है. This is not in your syllabus, but in some book it is given, and in NCERT it is also given in bracket. Okay, so let's see how did Newton guess the inverse square rule. Okay, so what is the answer of this question? Okay, by the help of Kepler's third law. Okay, Kepler एक अच्छे साइंटिस्ट थे. ओके, एंड इनके जो गुरु थे, दैट इज आई थिंक टाइको नेम इज देयर. ओके, actually this laws are given by them, not laws, this theory is given by them. Okay, and Kepler's converted that theory in these three laws. Okay, so Kepler's law देखते हैं क्या है. Kepler's law. Okay, first law of Kepler. In first law Kepler said that what? The orbit of a planet is an ellipse. Okay, and ellipse with sun,
The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. At one of the foci. अब समझते हैं इसको. फोकाई क्या होता है? प्लूरल ऑफ फोकस. प्लूरल ऑफ फोकस. ठीक है. अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं ये. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स. इलिप्स क्या है? जैसे कि मान लो कि सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को हमने दबा दिया. ठीक. एलिप्स का डिटेल जो है हम लोग यू विल स्टडी इन क्लास 11. ओके. सो सर्कल को हमने थोड़ा चपटा कर दिया तो ये हो गया इसमें अंडाकार. दैट इज एलिप्स. ठीक. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स. ठीक है. सपोज दिस इज प्लैनेट और इसका जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा? एलिप्स. इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल शेप में होगा. ओके. और ये ट्रेवल इलिप्टिकल पाथ में करेगा. ओके. विद द सन इज वन ऑफ द फोकाई. एलिप्स के दो फोकस होते हैं और सन किसी एक फोकाई पे रहेगा. ऐसा इन्होंने फर्स्ट लॉ में कहा. ठीक. अब एलिप्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L1 है. ओके. और दूसरे फोकस से इस प्लैनेट की डिस्टेंस L2 है. इट्स मीन L1 प्लस L2 इज कांस्टेंट. ओके. अब मान लो प्लैनेट यहाँ पे आ गया. ओके. फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज L3 and here to here suppose L4. Again L3 and L4 is constant. So we can say that L1 plus L2 is equal to L3 plus L4. Okay. तो ऐसा इन्होंने कहा कि what the orbit of a planet is an ellipse with the sun is with the sun at one of the foci. sun किसी भी एक फोकाई पे हो सकता है और जैसा जो पाथ होगा किसका? प्लैनेट का. that is what? elliptical. Okay. Now come to the next second law. Second law ये कहता है the line joining the planet and the sun, the line joining the planet and the sun, the line joining the planet and the sun, okay, sweep equal area, sweep equal area in equal interval of time. ठीक है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो इन्होंने ये तो बता दिया व्हाट कि जो प्लैनेट का पाथ है वो कैसा है? एलिप्टिकल है और सन किसी एक फोकाई पे है. ठीक. अब सेकेंड लॉ में क्या कहना चाह रहे हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. ठीक. द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स. अब इसको समझते हैं. स्वीप मीन्स व्हाट? झाड़ू लगाना. ओके. स्वीप मान लेते हैं कि 30 डेज में कोई 30 डेज मान लेते हैं 30 डेज में कोई प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है. ठीक. यहाँ से यहाँ आ गया. ठीक. इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पे आ गया तो इसने कुछ एरिया स्वीप किया. मान लेते हैं ये एरिया है A1. ओके. नेक्स्ट 30 डेज में ये यहाँ से स्वीप करके सपोज करो यहाँ आ गया 30 डेज. ओके. अब यहाँ भी कोई एरिया स्वीप करेगा. ये मान लेते हैं A2. तो इनका कहना ये था द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया. ठीक है. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम सेम है तो ये दोनों एरिया इक्वल होगा. मीन्स A1 इज इक्वल टू A2. करेक्ट. तो ये था इनका क्या? सेकेंड लॉ. ओके. अब जो थर्ड लॉ था यही बेसिकली इंपॉर्टेंट है. इसी से न्यूटन साहब ने व्हाट गेस किया? हाउ? व्हाट? इनवर्स स्क्वायर रूल. इसी से गेस किया. ओके. नाउ द क्यूब ऑफ ये जो था द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, the cube of the mean distance, the cube of the mean distance of a planet from the sun, of a planet from the sun, is proportional to the square of its orbital period. Proportional to the square of its orbital period. ठीक है. आओ उसको समझते हैं. ठीक.
पहले लॉ में क्या बोला गया कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन किसी एक फोकाई पे है। इसमें क्या कहता है, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस। ओके, मेन डिस्टेंस मींस एवरेज डिस्टेंस। ठीक, इसका जो एवरेज लिया गया, ओके, दैट इज आर, मींस द क्यूब, दैट इज आर क्यूब ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ठीक, ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है कि जितने टाइम में प्लैनेट एक चक्कर लगा ले सन का, दैट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल था किसके, टी स्क्वायर के। ठीक, ऐसा कहा किसने, कैपलर साहब ने। ओके, कैपलर सेड दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period. Okay, t means r cube is proportional to t square. अब आते हैं हम लोग कि न्यूटन साहब ने कैसे इसको गेस किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। One minute. Okay, now come to the next topic. What? How can Newton guess the inverse square rule? ठीक है, so by the help of Kepler's what third law। ठीक, सबसे पहले न्यूटन साहब ने ये माना क्या कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक, सन एक फोकस पे है। ओके, now the distance between planet and the sun is r। okay, now I already discussed what in the uniform circular motion हमने डिस्कस किया था, the force is acting towards the center। ठीक, फोर्स कहाँ एक्ट करता है, सर्कल के, सर्कुलर मोशन में सर्कल के सेंटर की ओर। ठीक, that is called what, centripetal force। okay, तो यहाँ भी फोर्स यहाँ लगेगा Fc। okay, and the acceleration, centripetal acceleration, that is v square upon r। okay, और कैपलर साहब ये बोल चुके थे कि the cube of the main distance is proportional to the square of the orbital period t। ठीक है, प्लैनेट का जो ऑर्बिटल पीरियड होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, नाउ in from Newton's second law, F is equal to ma। okay, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F is proportional to, directly proportional to A when mass is constant। here mass of the earth is, अर्थ नहीं कोई प्लैनेट का कांस्टेंट माना इन्होंने। ठीक है, और F को क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया किसके, A के। ओके, नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू, सी हियर, ये जो प्लैनेट है मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, एंड द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज इन ईच एंड एवरी मोमेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेट इज चेंजिंग। ओके, नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा भाई, circumference of the circle means 2 pi r upon time period or orbital period of this planet, that is what, capital T। now 2 pi is constant, means v is proportional to r upon t। now squaring both side, v square is proportional to r square upon t square। now we will put the value of t square from here, but this is not equal, but we can put, see how, r cube is equal to k, proportionality constant k upon t square। from here t square is equal to r cube upon k, can put here r square upon r cube into k, and we already discussed when the proportionality sign is there, okay, we can neglect the, हटा सकते हैं हम लोग क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, तो इसको हम यहां से हटा देंगे, अगर इक्वल टू होता तब नहीं हटा सकते थे। ओके, नाउ फ्रॉम हियर v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r।
ठीक, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फ्रॉम हियर ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ओके, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से हो गया वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर इंटू आर, देन एफ इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक, so this is inverse square rule used by Newton. Okay, this is universe, not universe. ठीक है, inverse square rule, inverse square rule used by Newton. ठीक है, तो यहीं से न्यूटन साहब ने गेस किया था क्या, इनवर्स स्क्वायर रूल. ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द acceleration due to gravity. Okay, and we will also find the value of g, small g. Okay, and we will see how small g is varying on north pole, equator, okay, and altitude, and in when we go to depth. Okay, now thank you. If you have any confusion, then ask me in the comment box. Okay.